under Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 stands introduced. Azam Saab to move item number 4C. Sir, I wish to introduce the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024. Sir, इसमें भी हमने 9 से 12 की हैं सीट्स, पेंडेंसी ज़्यादा है यहाँ पे। A bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 4D move कीजिए आज़म साहब. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with to take into consideration the bills from item number 4E to 4J. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take consideration of bill item number 4D to 4J. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Azam Nazir Sahab to move item number 4E. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. जी गौर साहब आप बात करना चाह रहे थे इस पे? सर अगर ये हमें भी सुन लेते ये अनफेयर है सर। तो ये बात कर लें। पहले मैं बताऊं तो सही, मैं नहीं सुनने दूंगा ना सर ना ये नहीं बोलेंगे। तशरीफ रखें ना सर पहले बात तो सुने गौर साहब ना इन्होंने इनकी बात सुनने फिर मैं आपको मौका देता हूं। बात सुनिए आप बात कीजिए। इनके लिए कानून फर्क है और हमारे लिए फर्क होगा। बात कीजिए आप सर ये सीरियस अफेयर है, ये नहीं चलेगा, ये कर ले फिर सर आप मैसेज में डाले ये नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे सर मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। मेंबर से कहें कि सुने इनकी बात ताकि आपकी बात भी सुनी जाए। इनको एक ही सबक पढ़ाया गया है, एक ही सबक इन्हें आता है, दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। देखें अगर आप चाहते हैं बात करें तो काइंडली टेक योर सीट। चाहते हैं तो ये सुनेंगे। आप इनसे कहें पहले इनकी बात सुन लें ताकि ये आपकी बात सुन लें। अगर आप बात नहीं मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाहते तो फिर भी गौर साहब करेंगे। गौर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। आप अगर इनकी बात आप लोग सुन लेंगे तो आपकी बात भी ये सुनने देंगे। तो आप प्लीज मेंबरान से कहें तशरीफ रखें, इनकी बात सुने फिर आपकी बारी आ जाएगी। जी आपकी बारी आ गई ना जी, मगर इनकी बात सुन लें पहले जी। मैं जनाब स्पीकर पहले जैसे क्या ये नहीं चलेगा सर, आप वोट करें। नहीं आप सर वोट करवाएं। नहीं बात नहीं सर मैंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये पाकिस्तान के गौर साहब इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी बात सुनी जाएगी तो आपकी भी सुनी जाएगी। इनको इनसे कहें तशरीफ रखें, अपने मेंबरान से कहें तशरीफ रखें ताकि इनको भी बोलने दें। आमिर डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को 34 तक बढ़ाने की तजवीज़ है। इस बिल को पेश किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में 2 ऑर्डिनेंसेस, 2 आज तवज्जो दिलाओ नोटिस और 1 ऑर्डिनेंस पेश किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल 2024 के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज़ भी दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। बिल की मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया है। जनाब स्पीकर मैंने बिल मूव कर दिया है। मेरी आपसे ये इस्तदा होगी कि सर इस पे वोटिंग कराई जाए। जनाब स्पीकर इस पे वोटिंग करा ली जाए। हाँ ठीक है सर, ठीक है इंट्रोड्यूस करें, पास कराते हैं।
अरे सर नहीं सुनेंगे ये, मैंने जो बात कह रही थी कह दी है। हाँ वो आमिर साहब गए हैं उनको समझाने, आपकी बात सुनेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। सर ये नहीं है, ये नहीं होगा सर, आज ये ना सुनना चाहते हैं ना ये सुनेंगे। मैं सर मूव करता हूँ, आप एक पास कराएं सर। ठीक है, पास कराएं। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now I take up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble, short title stands part of the bill. Law Minister Saab to move item number 4F. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. जी आजम साहब कुछ बताएंगे? देखिए गौर साहब गौर साहब रूल सबके लिए एक होगा। अगर इनकी बात सुनी जाएगी तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। आप करें गौर साहब, मैं बोल रहा हूं। अगर मेंबरान बैठ जाएंगे उनकी बात सुनेंगे तो आपकी बारी भी आ जाएगी। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं जी आजम साहब बात कीजिए। सर इन्हें सुनने की आदत नहीं आप है। बात कीजिए जी। ये चोरी चकारी की बात करते हैं, पहले वो 190 बिलियन का तो हिसाब दे खुदा के लिए। ये सारा कुछ आपके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। चले बात सर ये हमने जो नंबर ऑफ जजेस है इसको, ये बात नहीं हो सके, इनकी बात नहीं सुन रहे। नहीं आप सुनना ही नहीं चाहते जनाब गौर साहब आपको फ्लोर तब दूंगा जब इनकी बात सुनी जाएगी। जनाब इनकी बात सुनी जाएगी तो जनाब स्पीकर। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4G. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. गौहर साहब सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आपके लोग सुनने को नहीं तैयार। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to further amend Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. Clause 2, the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 do stand part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes
have it. Consequently, clause 5 stands part of the bill. The question is that clause 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.